Let's continue to learn active voice and passive voice. So we have seen the rules of passive voice. So first rule, so subject becomes the object and object becomes the subject. So here in this sentence, he ate the bread. So here he is subject, then the bread is object. So when we change from active to passive voice, then this subject becomes the object and the bread is the object. So this object will change or it will come in the place of subject. So subject ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे चला आता है. मतलब हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस में लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस में लिखते हैं. सो हियर ही एट द ब्रेड. सो हियर ही इज द सब्जेक्ट. यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है. और द ब्रेड क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो रूल्स के अनुसार द ब्रेड ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब सब्जेक्ट के जगह में हम लोग द ब्रेड को लिखेंगे और ही कहाँ चला जाएगा? ऑब्जेक्ट के स्थान में चला जाएगा. सो ही एट द ब्रेड. सो द ब्रेड वॉज ईटन बाय हिम. हम लोग पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं और वर्ब फॉर्म V3 इज यूज्ड. क्रिया का तीसरा रूप जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तब यूज करते हैं. और एक्टिव वॉइस क्वेश्चन सेंटेंस में है, तो व्हेन वी चेंज, जब हम लोग चेंज करते हैं तब क्वेश्चन सेंटेंस में ही वह वाक्य और सेंटेंस रहेगा. नेक्स्ट रूल, चेंजेस इन पर्सनल प्रोनाउन. सो जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब आई मी में बदल जाता है, वी अस में, दे देम, ही हिम, शी हर, इट एंड यू में बदल जाता है जब हम लोग एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब. सो दिस वन यू हैव टू नो, देन ओनली यू विल बी एबल टू चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस. So if any sentences that are given in past tenses, then how you can change from active to passive voice? So let's begin with simple past tense. If any sentence that is given in simple past tense, then how you can change from active to passive voice? मतलब कोई भी सेंटेंस सिंपल पास्ट में दिया हुआ रहेगा तो आप लोग कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. सो व्हेन वी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देन पैटर्न विल बी वॉज और वर, देन V3 बाय एन ऑब्जेक्ट. सो हेल्पिंग वर्ब मोस्टली वी यूज वॉज और वर. इफ सिंगुलर वी यूज वॉज, इफ प्लूरल वी यूज वर. सो लेट्स सी इन एग्जाम्पल. वी प्लेड क्रिकेट. दिस इज subject, this is V2 and this is object. हम लोग रूल में देखे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदल जाते हैं और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे यूज किया जाता है. सो व्हेन वी चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, देन इट विल बी क्रिकेट वाज प्लेड बाय अस. सो क्रिकेट, see, cricket is singular, so we are using helping verb was. Then V3 of played, then preposition by and we changes into us. Sentence, who created confusion in the class? So now who created? So last video we have seen, if the word who is there, then when we change into passive voice, then it changes into by whom. So by whom was confusion created in the class, and at the end question mark.
because question sentence remain as question only. This is yes no question. Did he post the letters? And here object is the letters, and the letters is plural, more than one letter. So we will use plural helping verb. That's why you have to begin with where the letters posted by him and at the end question mark. You have to just remember this pattern, especially for the simple past tense. So helping verb was or were will be used depending upon the subject, whether singular or plural. Plural है तो हम लोग where का यूज करेंगे, if singular है तो हम लोग was helping verb यूज करेंगे. Next tense we will see from the past tense, that is past continuous tense. So past continuous tense mostly was and were and before will be the structure or the patterns. But then when we change, then passive form will be was, were, then being plus V3, that is third form of the verb, then preposition by and then object. तो जब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करते हैं पासिव वॉइस में, तो उसका स्ट्रक्चर होता है was और were, then being and थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का तीसरा रूप, देन प्रेपोजिशन एंड देन ऑब्जेक्ट. सो लेट्स सी इन सेंटेंस. ही वॉज ड्राइविंग ए कार. सो पहले हम लोग को क्या करना है, ऑब्जेक्ट पता करना है, कौन सा ऑब्जेक्ट है इन ए सेंटेंस. सो हियर ऑब्जेक्ट इज ए कार. सो नाउ दिस ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल विल चेंज और इट विल गो इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट. सो व्हेन वी चेंज देन ए कार, so this object will go in the place of subject. So a car. So a car here it is singular or plural. A car singular है या plural है. So ये singular है. तो singular है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, helping verb was यूज करेंगे. So a car was, then since it is ing form is there, driving, playing, taking, then wherever ing form is there, then we use being. So here being, then third form of the verb, then preposition and then object. So a car was being driven by him. Next question is who were playing the matches. जहां पर who है तो who रहने से क्या करना है हम लोग को, by whom से स्टार्ट करना है, by whom, then by whom were, then the matches. So the matches being played and question sentence है तो at the end you have to use question mark. Next sentence, was he taking the pens. So here you have to first find out the object. So here object is the pens. So the pens here is plural forms, that's why I have to use the plural form of the helping verb. So we'll begin with were. So were the pens being taken by him, and at the end question mark. Next we'll see past perfect tense. कोई भी सेंटेंस अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो हम लोग कैसे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. तो पास्ट परफेक्ट टेंस में रहने से पैसिव फॉर्म होता है had been, then third form of the verb, then preposition by and then object. So let's see in example. My uncle had sold the house. So had sold is the indication that this sentence is past perfect tense. तो हम लोग को पता करना है object. So here object is the house. So as a rule object becomes the subject. So we'll write this the house in a place of subject. So the house then had been then sold by my uncle, because already V3 is there. So we have to use same thing. क्रिया का तीसरा रूप दिया हुआ है, so हम लोग को वही verb form यूज करना है. Only have to add been and write the same thing, then preposition, then object. Next question,
who had taken your books? If sentence begins with the word who, then we begin in a passive form by whom. So by whom had your books been taken? And at the end, question mark. Had you eaten the bread? So the bread is the object. So but then this is a yes no question. So yes no question में हम लोग helping verb को ही यूज करते हैं. So had, we have to begin with had only. So had, then the object will come, the bread, then been, then V3, that is eaten by you, and at the end question mark. Since it is a question sentence, we had to end with question sentence only. Next we will see future tense. अगर कोई सेंटेंस सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो हम लोग उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे. तो पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए ये स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा. विल और शैल, देन बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन प्रीपोजिशन एंड देन ऑब्जेक्ट. सो लेट्स सी इन द एग्जांपल. सो फर्स्ट, आई शैल मेक द केक. So this sentence is in simple future tense. So this one you have to change into passive voice. Then first of all हम लोग को पता करना है ऑब्जेक्ट कहाँ पे है. So this is the object, the cake. So according to rule, ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट के प्लेस में लिखते हैं. So first you have to write the cake. Then you have to use helping verb. कोई भी helping verb यूज करें ये सेंटेंस में, will और shall. Then you have to write be, be, be you have to write. Then third form of the verb, main verb is make. So make, made, made. So made is the third form of the verb. So made by me. I changes into me. The next, when will they construct the house? So again you have to find out the object. So here the house is the object. But then this is a question sentence. So you have to write first when, then helping verb will, then only you have to write this object here as the subject. Then be, then V3 of construct will be constructed by them. So they changes into them in a passive voice. Will you eat the cake? So again yes no question is there. So helping verb has to begin first. So will, then object is there. So object have to bring it here in the place of subject. Then you have to write be and V3. Be eaten by you, and at the end question mark. Next we will see future perfect tense. How we can change the sentences of future perfect tense into passive voice. Then to change active to passive of future perfect tense, you need to remember this pattern, that is will or shall, have been, then V3 and preposition and object. So let's see one example. He will have visited the temple before 8 a.m. So here you have to again find out the object. So the temple is the object here, so you have to bring it in the place of subject. So the temple will have been visited by him before 8 p.m. Second one, will they have opened a bank account? A bank account is your object, so it will come in the place of subject. But then this is yes no question. So yes no question always begin with helping verb. So will a bank account have been opened by them, and at the end question mark. Next we will see the tenses which don't have passive forms. That means ये 4 टेंसेस है जिसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं. जो भी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
में होगा तो हम लोग एक्टिव टू पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते हैं. सो दीज आर द टेंसेस टू विच we cannot change into passive voice. Means you cannot change into passive voice. So only you have to write no passive voice. Hope now you may have understood how to change active into passive voice of all the tenses, whether it is present tense, past tense or future tense.